Again, welcome to my YouTube channel that is Simple Concept. So today we are completing the some basic concept of chemistry, NCRT 11, the first chapter, and the part 2B. So basically in this chapter we have covered SI unit, mass, weight, density, volume and temperature. इस वीडियो में बेसिकली मैं SI यूनिट्स के बारे में, वेट क्या है, मास क्या है, उनकी मेजरमेंट, डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the easiest way how to define SI units and how many type of SI units and their measurement, and then mass, volume, weight, density, and different things. Again, there are some system of unit. So we have to discuss the international system of units. So generally these are called the SI units. The international system of SI units was established by the 11th General Conference on Weight and Measurement, shortly called the CGPM from Conference General Depots at Measure. So यहाँ पे हमने 7 टाइप के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफाइन किया है। यही हमारे जो 7 जो यूनिट है, दीज आर कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट वन इज अ मीटर। जनरली मीटर एम से डोनेट करते हैं और ये हमेशा लेंथ लेंथ जो हमारी एसआई यूनिट में होती है उसको हम मीटर पकड़ते हैं, राइट। और उसी तरह मास मास को किलोग्राम में लिखा जाता है और उसके शॉर्ट जो नोटेशंस होती है वो होती है केजी। लाइक उसी तरह केल्विन जो है वो टेम्परेचर के यूनिट को दर्शाता है, तो केल्विन के लिए हम के यूज़ करते हैं। टाइम सेकंड के लिए एस यूज़ करते हैं। अम्पायर अम्पायर इज़ अ करंट करंट के लिए ए यूज़ करते हैं। मोल इज़ द क्वांटिटी, इसके लिए हम मोल यूज़ करते हैं। और देन कैंडेला इंटेंसिटी, इसके लिए हम सी डी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से 7 जो यूनिट होते हैं जिसे हम एसआई यूनिट करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये एसआई यूनिट एक जैसा ही होते हैं। तो उसके बाद हम कुछ प्रीफिक्स और सिंबल्स के माध्यम से पकड़ते हैं, जैसे 10 टू द पावर ऑफ कितने होने से कितने होते हैं। आप ये स्क्रीन पे आप आसानी से देख सकते हैं कि 10 टू द पावर ऑफ -24 को योक्टो बोलते हैं, राइट। तो इसी तरह नैनो जो होता है वो 10 टू द पावर ऑफ -9 अगर पावर हो तो उसे हम नैनो कहते हैं, और वो सिंबल होता है एन। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरह से 10 टू द पावर ऑफ एन होने से प्रेफिक्स में क्या होता है और इसके सिंबल क्या होते हैं, राइट। उसी तरह हम मास एंड वेट की बात करते हैं। जस्ट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट matter present in it, while weight is the force exerted by the gravity on an object. The mass substance is constant wherever its weight may be vary from one place to another ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। मास जो होता है वो हमेशा एक ही होता है, आप कहीं पे भी ले जाओ। बट जो आपका वेट होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटी पे डिपेंड करने के कारण वेट अलग अलग होती है। तो अगर हम आप देख सकते हैं कि देर आर टू टाइप ऑफ बैलेंस। पहला जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये बहुत ही ट्रेडिशनल बैलेंस है, बहुत ही पुराना ओल्ड फैशन बैलेंस है। एक तरफ आपको वेइंग करना होगा और आप दूसरी तरफ आपको वेट रखने होंगे। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें वेट या मास ये काउंट करना है या फिर वेइंग करना है तो आप ये, बट till now some digital balance is also available in a market. So nowadays we are using digital balance, right. Then volume volume is the amount of space occupied by a substance. It has the unit of length to the power of cube. SI systems volume has unit of meter cube, but again in chemistry laboratories small volume are used in the volume is often denoted as centimeter cube और डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स। सो अगर हम इस क्यूब के माध्यम से पकड़े तो ये एक स्क्वायर है। द वॉल्यूम इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम 1000 ml भी कहते हैं, और उसे 1 डेसीमीटर क्यूब कह सकते हैं, और उसे हम 1 लीटर ही कहते हैं। जनरली लेबोरेटरीज में क्या होता है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट, ग्लास इक्विपमेंट, जिससे हम
वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं कि बुलेट है, उसमें हम अगर एमएल हमें लेना है वह तो हम जितने भी एमएल है अकॉर्डिंग टू बुलेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड देन अदर इज़ पीपेट। पीपेट में अलग अलग वॉल्यूम्स के आते हैं, 5 ml, 10 ml, 25 ml। तो हमें जितना एमएल की ज़रूरत होती है सॉल्यूशंस को हम पीपेट से पीपेट आउट करके उसको निकाल सकते हैं। देन द ग्रेजुएट सिलेंडर, जनरली जब हम कोई भी केमिकल्स, किसी भी प्रकार के केमिकल्स को लैबोरेटरीज में मिक्स करते हैं तो हम जनरली यूज़ करते हैं मेजरिंग सिलेंडर का। तो मेजरिंग सिलेंडर से हमें एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो मेज़र करने में आसानी होती है। तो हम 10 ml, 15 ml, 60 ml, 100 ml और इवन ओनली 1000 ml तक हम मेज़र कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आपके पास मेजरिंग सिलेंडर कितने एमएल की है। देन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जितने भी सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करते हैं हम लैबोरेटरीज में, वी आर यूजिंग द volumetric flasks, because volumetric flasks are the flasks which are already designed for the particular volume, like 250, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 liter. They are only designed to take a volume for a particular volume. So again is density. Density, the two properties mass and volume discussed above the related follow. Density equals to, we know, the mass by volume. So density is a substance, its amount, mass per unit volume. So SI unit of density is kg per meter cube. The unit is quite large, and the chemist often express density is gram per meter per centimeter cube, where the mass is expressed in gram and volume is expressed in centimeter cube. Density of substance tells us about the closely its practical particles are packed. If the density is more, it means the uh, particles are more closely packed. So the density defined as the packing of the molecules of any substance, right? Next is temperature. Now temperature, there are three basically common scale of measuring. First one is Celsius, degree Celsius. Another one is the Fahrenheit, degree Fahrenheit, and another one is Kelvin. So there are three type of temperature scale. First one is Celsius scale, then Fahrenheit scale, and then Kelvin scale. Here Kelvin scale is the SI unit. So generally the thermometer will the Celsius scale are calibrated from 0 to 100 degree Celsius, where those two temperatures are freezing point of and the boiling point of water. 0 degree is the freezing point of water and 100 degree are the boiling point of water respectively. The Fahrenheit scale is represented between 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. It is interestingly to note that the temperatures below 0 degree, that is the negative value, are possible in Celsius but not in the Kelvin scales. Negative temperature is not possible in Kelvin scale. See the structures, there are three type of scale is there: Kelvin, Celsius, and the Fahrenheit. Celsius, first of Kelvin to 73.1 K, we are adding, suppose we identify we conversion of Celsius to Kelvin scale. So 0 degree Celsius is converted to Kelvin. We have to add uh, plus 273.1, right? This is just like in Celsius scale, 0 to 100 degree Celsius, there the range of there, and the Fahrenheit 32 degree Celsius to 212 degree Fahrenheit. So these are the basic unit, SI unit of any matters. So thank you for watching my videos. If you are really enjoying this video, please subscribe the channel, share it, and like it. Thank you.